welcome back to our channel. You're here with me, Spreet and Steve BK. Okay, today guys, we're watching Dhindora, episode 7, and it's Toota ek Taara. Yeah, BBK Vines guys, he's new episode, been looking forward to it. You guys know how we felt when it finished last week. If you're new to the channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out the channel, which is Cool Art Touch. Links will be in the description below. Guys, like I always say before we start any video, that पहला original content creator दे channel ते जाके उन्होंने दी original video देखियो, उन्होंने view दियो, like दियो, share करियो, फिर बाद विच साडा आंके reaction साडा देख लियो. So just want to basically put that out there. Honestly, always go and watch the original video first. Give them the love and support. They put a lot of hard work into it and they deserve that. And like I said, then afterwards come and watch it with us. That's why we put it a couple of days sort of later. So shall we just check this one out? Yeah. Let's Looking go. forward to this. And just to recap, Udi Yadash Morge Agisi. And some people actually did say that they sort of, my police officer skills came in when I went he asked for Boa. Yeah. Right at the starting, but I'm guessing many other people probably saw that as well. Unlike me, because I thought that his memory came back here. Like he wanted the ball, and then all of a sudden the phone call. So we want to know what's going on after that. So Babluji, what you up to? Chi. So here we go. Jal dekhiye. क्या हो रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का ऑफर। और अब ट्रिनिटी में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। One. Spit it out. बबलू अंकल, Saved by the bell. बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। जा। चलो ना प्लीज। वो क्या करती है पीछे? बाहर बुला रहे हैं सब। नच दिया। जानकी, बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? तुम पता लगना। दसो। पेट खोलना हो। बहन जो करते हैं वो अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपनी इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है बहन? जो ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में फिर रोंगटे खड़े होते हैं। तू पागल है। He's so good. He's funny. उदम बाथरूम गया सीगा है ना, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸੁਝਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਗਵਾਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ये ले टिक्की। अबे अगर किसी इंसान के हार्ड पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? ਉਹ बेचਣ ਲੱਗੇ ਆ पैसे पुछदे किन्ने बनने आ सो याददाश्त उदों ही आ गई इसकी हाँ लॉटरी दी टिकट ਉਹਦੇ पास ही आ हाँ जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना। भोसड़ी के फोन।
ओह भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो, जय माता दी रोटी, हेलो। जय माता दी रोटी। लॉटरी, से रोटी। ये माता दी लॉटरी है ਉਹਦਾ ਨਾਂ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। That's why. लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। बेचारा। मस्ती की जाए, याददाश्त का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी आता, मैं तो लगा मराठी मध्ये सांग, नहीं लगी लॉटरी मेरी। Oh God sake. ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि गर्मी में मफलर पहनने वाले I really love it. Oh dear. What? मुंह साफ करना सीखा। मैं पिलपिली गांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। उसके डायनासोर। ओके डायनासोर। ले पकड़ बे। How come that's what? जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना है। करी ਜਾਂਦੇ ਆ बस। ਇਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ देखो। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? चलती फिरती सवाल पेंशन। पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर, तू ट्रिलियनेयर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? लगी शुरू। Oh no. हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? या क्या? नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा। वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को, हाँ अच्छा, ओके। रबर बैंड नहीं लगती। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। इतने मैं पैसे कल आता होके। हूँ, ये लतिका दे दे मुझे। पैसे ले आ, लतिका ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा?
बबलू जी ये सरासर धोखेबाजी है। हाँ उन्हें कुछ क्या भी नहीं। पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। वाह रे। देखिए मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे ले जाइए, आइए ले जाइए। फिर कोई ना जो उन्होंने कुछ है नहीं सीगा, उदों कोई बुलाता भी नहीं सीगा, कुछ हेल्प ही नहीं करता, तो पता लगा तो सारे रिश्ता बना लेंगे। I feel so sorry for him. नहीं उन्हें कुछ किया भी नहीं सीगा। उन्हें क्या हुई सीगा उन्हें? Hi! In Loti, Oh my god! Don't think too much of Come, just I that. have to tell you something. It's not everything. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम excitement? Congratulations. एक काम करते हैं. पहले मैं चली जाती हूँ. फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए. Then you can also join me. 2 महीने बाद 2 weeks का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है. लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टर्डम. सब जगह जाएंगे. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूंगी. पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में. उनको एम्स्टर्डम का नहीं बताऊंगी. वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है. We're gonna have the time of our lives. कुछ हुआ है क्या? सब झूठ था. पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं. मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी,
मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया बस। सब झूठ। अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते, और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता, और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते, और शायद हम कभी ना मिल पाते। इससे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। There's something positive in it. You always look at the negative. The silver linings. और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब? वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। हो क्या पता हो ये भी सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, क्या है वो? दूर बैठ गई। I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। She's so optimistic. प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। And who are you to decide for me? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। हो क्या पता हो ये भी सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। She
thinks positively. He just thinks how everyone else would think in it, like, you know, from what you listen to and hear and life tells you kind of thing. I'm sorry for the drama, to be honest. I actually feel sorry for all of them, really. Nice song. When I watched it to the end, he put on his Instagram just saying, look, just appreciate everyone who's worked on there and just watch the end credits. So it's a nice song, anyway. I'm gonna say stick with us. I've got loads that I want to say, but anyway, yeah, I was gonna say what you call it. Yeah, Bhuvan did put into his Instagram that, you know, watch it to the end credits. Like, you know, appreciate everyone's who put their hard work in. So I just want to make sure that we watched it to the end. You know, like I said, it's all about, you know, he's created it, so it's important to him. So it's important to everyone else. Go on, you first, because I know that I end up, like, you know, saying everything and then you say, oh God, I want to say everything you want to say. So don't go on. It was completely different to what we've watched so far. It's really heartfelt this time round instead of all the giggling laughters that we have. I mean, there was a bit at the beginning, but it was more touching, especially his little part in there with his girlfriend. Song was amazing. Absolutely loved the song, and it sounded like it was him actually singing. It could be. I could have a look. Like you carry on talking whilst I'll have a quick look. Yeah, beautiful, the words to it. This is lovely. Toota Taara, so Toota ek Taara, obviously. But yeah. And the lottery ticket, oh God, the mistake he made, what a shame. And him standing up for his father, like going towards the crowd, like you were saying, like people that are nutty on there when they find out, you know what, someone's, you know, become a meat or whatever else, would they have actually have come if they knew he was just unwell in hospital, for all the line like you see with gifts and toffee and stuff, and him standing up for his dad, and actually that was really sweet as well. Yeah, I got really sad for him. Like you said, there were so many different things. It wasn't the normal humour ones that we've seen in the other ones. This was more heartfelt. Like obviously, you felt sorry for Bablu G. You did. Well, you did feel sorry for his wife as well. You know what, Nikushi. You know what, you understand why she did what she did, and then. You know, one moment in the last episode, you like thought, you know, on him on the phone, and obviously you was like going, oh my God, what's he doing? I said, no, he can't be that kind of a guy. Yeah. But what is it going to go? In this one, it just felt like, you know, it was like life's lessons. I think it was more in this episode than anything. Number one, it's that thing of, you know, like just because either
पढ़िया नहीं चंगी तरह or something like that, वो नहीं खुशी होगी मैं कुछ जीत गया or some, you know, like you said, that zero, like people, you get told in life that zero means nothing, you know, you don't count them as anything. Sometimes zero could be the main thing, you know, and so, and it's how they felt about themselves. Like he felt all the time that he was a zero kind of thing, and all of a sudden this appreciation that people give you when you feel that zero is nothing, that make us any kind of thing, you get it, you know, you don't know how to deal with it, you want to accept it, you want to be happy with it, we all want it, and then you know, in a slight moment it could just sort of be taken away, and people sit in different, you know, and he's really good at heart, and you know, he wasn't doing it to hurt anyone. Like he said to his wife, don't tell anyone, but yeah, he didn't even say anything bad about his wife that one, because like, you know, he was so nice towards that, he didn't want to hurt anyone. And like I said, sometimes everyone makes mistakes, but people always pinpoint the mistakes, but never like anything else. He didn't go around telling anyone that he won the lottery. He didn't go around promising people the world. And like I said, at the start in life, when he had nothing, weren't anything, no one's bothered. You're nobody in that corner. People are happy with you being that. They don't want to help or anything. Soon as they think that you're somebody or you got something, they all come running and they all like see what they're gonna. And sooner they know that this person's broken and fallen again, they want nothing to do with it and they want to walk away. They want to know that, well, what our time or our moment that we invested, we want that back. But what I loved was with the song and everything, like you said, it was so beautiful. And like she was really like positive as well. Everything he said, she had an answer for it, and he didn't seem like he, you know. That no, again with him, I feel like, you know, when you grow up from watching movies or TV shows or Friends or anything like that, they always say that we pick up everything, even though we haven't experienced it ourselves. We hear it from others. Long-term relationships don't work, but yet you haven't been in a long-term relationship. Oh, if we go to another place, you could be living in India, and if you get told that if you go into this area, it's not nice, you've never probably even been, or don't try this food, it's like this, and people won't try it. It's everything in life. So your mindset is always like, I don't want to do. I think the main thing I got from it is how we always, or people tend to see something negative as in lottery jitti, but we didn't really win it. He saw that, lost the lottery, well, we didn't win it. All the people are thinking of us like this. Why did this happen in the first place? And she's going away, but she turned around and says, if you want to see the, you know, like the opportunity, optimism, the, you know, the positive side of it, we would have never met. If he didn't win that lottery, he didn't get knocked over, he didn't go to hospital, they wouldn't have met. Who knows where their story's going to go? There's something. You can see that things happen always for a reason. What is meant to be is meant to be. Sometimes it's not what you expect, but it's something totally else. But sometimes it could be right in front of us, but we don't see that because we're looking at everything else. And it seems that I think the only thing with this is sometimes what you think you need is not what you need, is it? It's always no. And life, God, universe, whatever you want to call it, has a bigger plan for you. That's how I sort of I'm getting that kind of thing. That it was more or less to tell all of us, like, guys, sometimes just because you think you haven't won something or you haven't, you know, or you've lost something, you've got to aim, you're going, you've got to also you feel that you're going, but you don't go that way. And not only that, it's you gain something from even the things that when things go wrong, but you never see those until, you know. And like I said, normally it's a cliffhanger. I'm like, this time it was more like mellow, like as in, but it's still putting something like, you know, two mamas getting beaten up and stuff like that. And so again, you feel sorry for him, you feel sorry for them. She's hoping that there's a relationship that's going to grow. Again, you know, you look into it like, now what's this situation with Ritu Mama's going to happen? Obviously with Babluji and that, like, you know, that society are condemning them and don't like them, and you know, you've got to still get through that kind of moment. When he was talking to him and trying to correct them, you could see they're all like thinking, but like you know for a fact that it's going to. It was lovely that the son, like, you know, even though he was upset as well, that and again, another thing is honesty sometimes is the best policy. You know, he could have just got up right then and everyone could be standing up there and gone,
you know, found out and came out, regardless of people there, regardless of disappointment. I understand, you know, sometimes you don't want to break people's heart, but it happens anyway. It's going to happen one day. So honestly, he could have just came out and gone, guys, I made a mistake, and he could have been like that. But Dhindora to, you know, something happened, Dhindora sudden, you know, and all of a sudden it can just like a ripple effect of how you can create and change. And Titu Mom was in a situation where he thought he can get the money, so he promised all that he can. Obviously he can't, but Jara's getting like beaten up now. So now the thing is, obviously you got their story, like, you know, that they just got to get on with society. Yeah, people are going to go to, you know, after a while kise hor de ghar kuch ho jana and fir gallan hor ho janiyan. It doesn't last forever, you just got to abide by it. But it's about his love story, does she leave, what their relationship going to be, but moral sense, like, you know, like you're thinking what's going to happen with that Titu Mama kind of situation now, you know, that and I mean, Samir and you know, his friends, basically they didn't have much of you know, in this one. But hey, it was lovely. It was a different take. Like I said, it was more sort of drama and a bit of romance and a bit of emotion, and you know, and again, he like showed how capable he is of doing, you know, from just comedy to humour, making everyone laugh, but at the same time to also touch people's hearts and also connect people emotionally as well in a different way. So he so many different kind of roles or scenes that he can create. And again, like I said, visuals are always great, and a beautiful song. I thought the female actress, she's really amazing. good. She's so and not only that, I really liked her character as well, because I think we need more people like that. That even when you're low and you're down, she was still more or less going, you know, do you really need the school? You are so good at what you do. You just do it anyway. Doesn't matter if he wasn't making money. Doesn't matter, you know. And that's what I think everyone needs. That was the video. Anything else? No. That was the video, guys. Still, it was fun. It was enjoyable in a total different way, and not what you always expect. You want it to go. Yeah, you always have this thing, and it just still can blow your mind in a total different way. Looking forward to more and more. So don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you in the next one. See you guys. Bye.